know that Earth is full of things, solid, liquid and gases. And all these things, or primarily these things, falls in two categories, that is metals and non-metals. These metals and non-metals existed since the formation of Earth. So, let us start and see about them in details. So first, we will be discussing about element. Element is a simpler, pure form of matter that cannot be decomposed into simpler forms. These elements can be classified into two categories, metals and non-metals. Aluminum, mercury, silver, gold, platinum are the examples of metal. Diamond, graphite, carbon, nitrogen, oxygen are the examples of non-metals. So, let us learn about metals and non-metals first. The first element which we are going to see is metals. So, what are metals? Metals are solid substance which are hard, shiny, malleable, ductile and they are good conductor of heat and electricity. ये सारे के सारे metals जो है वो mostly solid state में होते हैं और हम इसे अर्थ क्रस्ट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं. दूसरा, ये सारे के सारे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में जो है 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाते हैं. सो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स हैव 1, 2, 3 valence electron and always lose to form electropositive ions. And sodium, potassium, aluminum, magnesium are few examples of metals. The second element is non-metals. Non-metals does not have the properties of metals, that is, they are not solid, hard, malleable, ductile, good conductor of heat and electricity. They are not showing any of these properties. Second one, the non-metals have 5, 6, 7 valence electron in their outermost shell and that means they always gain electron to form electronegative ions. Examples of non-metals are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iodine, chlorine, bromine. All are the examples of non-metals and this non-metals जो है वो solid, liquid और gaseous तीनों के तीनों state में present है. So what are non-metals? The metals which does not show the properties like metals and they have 5, 6, 7 valence electron in their outermost shell and gain electron to form electronegative ions. Now we are going to study about physical properties of metals and non-metals. बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि जो भी चीजों की हम देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं सब्सटेंस को, वो सारी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सी चीजें देखने वाले हैं? फिजिकल स्टेट, लस्टर, कलर, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सोनोरोसिटी. तो ये सारी चीजें जो है हम देखने वाले हैं किसकी? तो के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल स्टेट. ये सारे के सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है. ये एग्जाम्पल जैसे मेटल्स के हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर.
बट मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शनल केस है। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है एट द रूम टेम्परेचर। और ये मर्क्यूरी जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं? थर्मोमीटर में। ये थर्मोमीटर में जो ग्रेइश सिल्वर कलर का जो है शाइनी सब्सटेंस होता है वो क्या है? मर्क्यूरी है। तो ये मर्क्यूरी मेटल जो है वो कौन से स्टेट में? तो के लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। सो व्हाट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर except for mercury which occurs in liquid state at room temperature. Non-metals exist in solid or gaseous state at room temperature, but except for bromine it exists in the liquid state at room temperature. So what is the physical state of non-metals? They exist in solid as well as gaseous state except for bromine, which is a non-metal that exists in liquid state at room temperature. Luster. The next property is luster. The metals have shiny or lustrous surface because of the fact that metals can be polished. So metal जो है उनका कैसा सरफेस होता है? शाइनी सरफेस होता है। और इसकी वजह से कि उनका सरफेस शाइनिंग है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम मेटल्स जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, उसको ज्वेलरीज बनाने के लिए या तो डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सो metals have got lustrous or shiny surface because of the fact that metals can be polished, and due to this property of metals they are used for making jewelries and other decorative items. Non-metals have generally dull surface as most of them occurs in powder or gaseous state, so they cannot be polished like metals. ये लस्टर जो है प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल्स नहीं बताता। क्यों? क्योंकि मोस्टली नॉन मेटल्स जो है या तो पाउडर्ड या तो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, इसीलिए दे हैव डल सरफेस। इसमें दो एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट जो कार्बन का फॉर्म है और ये ग्रेफाइट हम पेंसिल जो लिखते हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो लस्ट्रस सरफेस बताते हैं। सो almost all non-metals have dull surface as most of them are in powdered or gaseous form. Color. Color is the next physical property which we are going to discuss about metals and non-metals. Mostly all metals are white or silvery gray in color, but few exceptionals are there. Sodium, gold, copper, they are colored in nature. For example, gold. Gold is yellowish in color and copper is reddish brown in color. Some non-metals are colorless while some are colored. For example, chlorine is greenish yellow gas, bromine is brown liquid and iodine is violet solid. But gases like nitrogen and oxygen are colorless gas. यहाँ पे जैसे पिक्चर में आयोडीन बताया है तो वो कौन से कलर का है? पर्पल कलर का है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है गैसेस वो कलरलेस है। सो नॉन मेटल्स जो है वो कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी होते हैं। हार्डनेस, that is the next physical property of metals and non-metals which we are going to discuss. Most of the metals are hard, but some like potassium and sodium are soft and that can be cut with knife.
सारे के सारे मेटल्स जो है वो मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट 2-3 एक्सेप्शनल केस हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं और हम नाइफ की हेल्प से उसे काट भी सकते हैं। जैसे पिक्चर में बताया है, सोडियम को हम नाइफ से कट कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे पीस में कट हो जाते हैं। सो metals like potassium and sodium are soft that can be cut with knife. Non-metals are generally soft, but exceptional case is diamond. Diamond is a form of carbon which is the hardest substance of all. So non-metals क्या है तो कि generally soft होते हैं, but इसका exceptional case कौन सा है, डायमंड। हाँ, जो हम लोग जो है ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं और इसे हम गर्ल्स का बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं। सो ये डायमंड जो है ये कार्बन का फॉर्म है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। सो नॉन मेटल में डायमंड जो है वो हार्ड है, बाकी के मोस्टली सारे के सारे नॉन मेटल्स जो है वो कैसे होंगे, सॉफ्ट। Malleability. The next property of metal is malleability. What is malleability? The property by virtue of which metals can be beaten into thin sheet is known as malleability. Most of the metals like aluminum, gold, silver, copper show this property of malleability. That means they can be beaten into thin sheets. तो इनको जो है हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर ये सारी ज्वेलरीज बनाने के लिए काम आते हैं। और जो हम खाने की चीजों को रैप करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में, वो एल्यूमिनियम मेटल जो है कौन सी प्रॉपर्टी बताता है, मेलिएबिलिटी। दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू thin sheets. So metals shows the property of malleability, that is they can be beaten into thin sheets without breaking or cracking. And iron, copper, tin, aluminum, silver, gold, all these are malleable metals. Next physical property is ductility. What do you mean by ductility? Ductility is the property due to which a material can be beaten into wires is known as ductility. The metals will show this property of ductility. ये जो है हम इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज करते हैं उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो इजीली ड्रॉन हो जाता है थिन वायर्स की फॉर्म में। सो एल्यूमिनियम, copper, tungsten, silver, gold, all are ductile metals. That means they can be drawn into thin wires. और इनमें से गोल्ड जो है ना वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। अगर हम 1 ग्राम जो है गोल्ड लेते हैं तो वो 2 किलोमीटर्स लेंथ के वायर के फॉर्म में हमें मिलता है। सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मेडल can be drawn into gold wire of 2 किलोमीटर लेंथ। इसीलिए गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी शो करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन into thin wire is called ductility, and most metals can be easily drawn into wires. So examples are aluminium, copper, tungsten, silver and gold. Non-metals are brittle. That means they can easily broken. Therefore, non-metals will not show the property of malleability as well as ductility. ये नॉन मेटल जो है ना वो आसानी से टूट जाते हैं और इसे हम ब्रिटल कहते हैं। इसकी वजह से ना तो ये हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और न ही जो है उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दे आर नॉट मेलेबल as well as they are not ductile in nature because they are brittle. That means they can be broken easily.
Next physical property which we are going to see is thermal and electrical conductivity. Metals are good conductor of heat and electricity, and silver and copper are considered as a best conductor of heat and electricity. Because of this property of metal, they are used for making utensils as well as electrical wires. ये मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है. इसकी वजह से हम इसे खाने बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है इसमें हम यूज करते हैं. और इनमें से सिल्वर और कॉपर जो है मेटल, दे आर कंसिडर एज अ बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो के कॉपर यूज करते हैं. फिर हम ये खाना बनाने के जो बर्तन है उसमें भी हम मेटल्स जो है यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या, तो के दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. बट सम एक्सेप्शनल्स आर देयर. फॉर एग्जाम्पल मेटल मर्क्यूरी जो है, वो जो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, वो मर्क्यूरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. बाकी के मेटल्स जो है दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल सी एन एक्टिविटी which shows that metals are good conductor and non-metals are poor conductor. So what is the aim? Aim is to show metals are good conductor of electricity and non-metals are poor conductor of electricity. Metals are good conductors of electricity. In this module, you will learn that the metals are good conductors of electricity. You might have noticed that electricians use an electric tester that has a plastic insulation at the touching or holding end. Why is it so? Well, you will be able to answer this question after doing this activity. For this activity, we need iron rod, coal, copper wire, a piece of plastic, insulated electric wires and a bulb. Make an electric circuit with the help of electric wires, battery and the bulb. Connect the iron rod between the open ends of the wires. What do you see? You can see that the bulb glows. It means that iron rod is a good conductor of electricity. Now connect the coal piece between the open ends of wires. You will observe that the bulb does not glow this time. It shows that coal is a bad conductor of electricity. On repeating the same activity with copper wire, you will see that the bulb glows. On the other hand, when the piece of plastic is connected between the open ends of wire, the bulb does not glow. On the basis of these observations, these materials can be grouped as good conductors and bad conductors of electricity. You can see from the table that metals like iron rod and copper wire are good conductors of electricity and coal and plastic are bad conductors of electricity. So a tester is insulated by plastic to protect the holder from electric shock, as it is a bad conductor of electricity. In this module, you have learnt that metals are good conductor of electricity. That is, they allow electric current to pass through them. Now we will see an activity to prove that metals are good conductor of heat. Conductivity of metals. We already know that metals conduct heat. Here is a wonderful experiment to prove that metals conduct heat.
Materials required for the experiment: stand, iron rod, nails, candle, matchbox, screw. Procedure: take a stand, fix the iron rod to the stand by using a screw. Now fix the nails to the iron rod by using candle wax. Lit the candle and bring it near the iron rod. The iron rod gets heated and slowly the nails fell down one by one. This experiment clearly shows that heat moves from one end of the iron rod to the other. This property is known as conductivity of heat. In this module, we have learned that metals conduct heat. Non-metals are mostly poor conductor of heat and electricity, but few exceptionals are there. For example, diamond. Diamond is a good conductor of heat, and another one is graphite. Graphite is also non-metal that is good conductor of electricity. Yes, the graphite is the non-metal which we are using in the pencil lid. So, diamond and graphite are the two exceptional cases which are good conductor of heat and electricity, but mostly almost all non-metals are poor conductor of heat and electricity. The next physical property which we are going to see is sonority. What do you mean by it? The property by virtue of which metals produces a ringing sound when struck with a hard object is known as sonority. Now, metals will show this property. So, when a piece of metal is struck with something hard, it produces ringing sound. That means metals are said to be sonorous. For example, bells are there, wind chimes are there. They all will show this property of sonority, means they will produce a ringing sound. So, metals have this property of sonority. That means that when it's struck with something hard, it produces ringing sound. So, non-metals are non-sonorous in nature. That means they produces a very dull sound when struck with a hard object. So, non-metals are non-sonorous in nature and metals are sonorous in nature. That means they will produce a sound when struck with a hard object. So, student, we have completed the physical properties of metals and non-metals. Hope the concepts are clear. What we saw in this topic, we saw physical state, color, luster, hardness, malleability, ductility, sonority, thermal and electrical conductivity of metals and non-metals in details along with the exceptional cases. Dear student, what we have studied till now, hope the concepts are clear. So, keep on learning, utilize your time